Hello everyone, guys. Today in this class we will discuss about quasi-linear utility functions. First we will discuss about its meaning, then how to formulate indifference curve, then how to find demand or the optimal bundle, and then the price and income elasticity of demand. So let's start with its meaning. We are again in two good model, that is good x and good y. Now utility x comma y equals to सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई. याद रखना, ये जो भी फंक्शन होगा, पहले मैं आपके लिए एक्स एफ एक्स को डिफाइन कर रहा हूं, ये नॉन लीनियर होगा, राइट, एंड दिस वाई इज लीनियर. लीनियर का मतलब क्या? जिसकी पावर 1 होती है, दैट इज योर लीनियर फंक्शन. अब मैं नॉन लीनियर बोल रहा हूँ, दैट मीन जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, उसकी पावर 1 नहीं होगी, दैट इज नॉन लीनियर. एडिशनली एफ एक्स के साथ मैं दो प्रॉपर्टीज और अटैच कर रहा हूँ. नंबर 1, एफ डैश एक्स इज मोर देन 0, दैट मीन्स एफ एक्स इज माई इंक्रीजिंग फंक्शन. सेकेंड, मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूँ, एफ डबल डैश इज नेगेटिव, विच मीन्स दैट एफ एक्स इज माई कॉन्वेक्स फंक्शन, राइट. अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज को हम फुलफिल कर पा रहे हैं. पहले एक एग्जांपल की बात करते हैं. सो लेट्स से यूटिलिटी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई. फर्स्टली, क्या ये नॉन लीनियर है? बिल्कुल है जी, क्योंकि इसकी पावर 1 नहीं है. क्या ये लीनियर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी पावर 1 है. अब बात करते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी की, दैट इज एफ डैश एक्स. अगर आप लेट्स से योर एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है, तो व्हाट इज योर एफ डैश एक्स गाइस? डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट 1/2 रूट एक्स. याद रखना, एक्स इज योर कंजम्पशन बंडल, तो ऑब्वियसली एक्स इज ऑलवेज मोर देन 0. सिंस एक्स इज ऑलवेज मोर देन 0, दिस इज मोर देन 0, देयरफॉर हमने ये वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है. So now let's talk about second condition, that is f double dash x. You need to differentiate this function again with respect to x. You'll get your answer as minus 1/4 into 1 by x to the power 3/2. So we know that this is positive, right, because x can't take negative values. This is positive and this is negative, so because of this negative sign, this becomes negative and therefore this is a convex function. So हमने दोनों properties को satisfy कर दिया है, right? So we have more examples. You can do these examples as your homework. So utility x comma y equals to log of x plus, write down second, utility x comma y equals to x to the power 2/3 plus y by 4. So guys, you need to see whether these two functions satisfies the property of quasi-linear utility functions or not. So guys, now let's talk about indifference curves. But before that, I want to tell you something about quasi-linear utility functions. So this is रूट एक्स प्लस वाई. सो एक चीज़ प्लीज़ याद रखना कि जो भी फंक्शन नॉन लीनियर होगा वो आपका नेसेसिटी होगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल फूड, राइट. सो विद लेस इनकम और नियरली इनकम इक्वल्स टू 0, यू नीड टू कंज्यूम फूड, राइट. बट जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती है, यू कैन कंज्यूम in other goods as well. Yeah, so this is other goods and this is food which is your necessity, right. Secondly, हमें IC निकालने के लिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, हमें MRS निकालना पड़ता है. Now in this case, what is your MRS? MUX by MUY, that is marginal utility of x by marginal utility of y. Now in order to find marginal utility of x, we know that we need to differentiate this function with respect to x.
तो जैसे आप डिफरेंशिएट करते यू विल गेट 1/2 रूट एक्स, marginal utility of y, differentiate this function with respect to y, you will get 1. So your MRS is a function of only one good, that is a quasi-linear, non-linear good, right? So in this case, if you increase x, your MRS will decrease. Remember that. If you increase x, your MRS will decrease. Therefore, your indifference curves are कॉन्वेक्स, राइट? यही हमने देखा था कि हमारे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स आएंगे अगर हम x को इंक्रीज करते हैं और हमारा एमआरएस डिक्रीज होता है. वन थिंग मोर, इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज y, then it will not affect your MRS. It will not affect your MRS. Why? Because MRS is not a function of y, right? So अभी हमने क्या देखा कि पहली चीज ICs आर कॉन्वेक्स, राइट? सेकेंडली मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ, सिंस MRS इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y, therefore your ICs are vertical translate and they are parallel to each other. Let's see how. So अभी हम देखना है कॉन्वेक्स एंड वो पैरेलल कैसे होंगे. For this I need to write an equation. We know that utility x comma y equals to root x plus y, right? So यहाँ पे मैं utility के लिए एक नंबर रिज्यूम करता हूँ. लेट्स से दैट नंबर इज 20 equals to root x plus y. Solving for y, I'll get 20 minus root x, right? अब for this equation I need to draw the indifference curve. Let's say यहाँ पे हम indifference curve को draw करते हैं, right? So this is for good x, this is for good y, right? अब मुझे एक चीज का आंसर दो. When x equals to 0, y equals to 20. So let's say this is equals to 20, and for y equals to 0, x equals to, ध्यान से देखना, so x equals to 400. So let's say this is equals to 400. So यहाँ पे आप एक IC बना दोगे ऐसे, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यूटिलिटी को 20 से लेट्स से हमने कर दिया 40. सो 40 इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस वाई. सॉल्विंग फॉर वाई आई विल गेट दिस एज 40 माइनस रूट एक्स. अब मुझे एक चीज का आंसर दो. इफ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 40, so let's say this is 40, and if y equals to 0, x equals to 1600, so let's say this is 1600. So guys, एक चीज का याद रखना, मैंने आपको बोला था कि पैरेलल डिस्टेंस सेम रहेगा, दे विल शिफ्ट पैरेलल. वो कैसे होगा? फॉर अ गिवन लेवल ऑफ x, तो स्टार्ट करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0, राइट? सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 आप यहाँ पे हो, तो जब आपको यूटिलिटी 20 की मिल रही थी, आप y 20 कंज्यूम कर रहे थे. जब आपको यूटिलिटी 40 की मिल रही थी गिवन x इक्वल्स टू 0, तब आप y 40 कंज्यूम करते. इसका मतलब क्या? आपकी यूटिलिटी 20 से इंक्रीज हुई और आपका y भी 20 से इंक्रीज हो गया यहाँ पे, राइट? So let's take another example. For a given value of x, let's say x equals to 4. So when x equals to 4, अगर मैं इस इक्वेशन में 4 डालता हूँ, so I'll get my y equals to 18. And in this case, for x equals to 4, क्योंकि पहले मैंने 0 के साथ कंपेयर किया था, my y will be equals to 38. अब ध्यान से देखना एक बार, जब x equals to 4 है, so let's say my 4 is here, my y is equals to 18, and for x equals to 4, for the given level of utility which is equals to 40, my y equals to 38. तो अब बताओ, अब कितना डिस्टेंस है y के बीच में? अगेन 20, पहले भी 20 का था, इसलिए वी आर सेइंग this parallel distance will remain same.
therefore they are parallel shift, or they are vertical translate of each other, right? This is the meaning of vertical translate or parallel. Now let's look at demand or the optimal bundle, right? So in this case we need to use two equations. Number one is budget line, that is px into x plus py into y equals to m, and the second one is utility function, which is equals to root x plus y, right? So guys, you need to apply Lagrange theorem here, but I am writing the conclusion, that is, since your ICs are convex, we need to equate MRS with price ratio, that is slope of budget line. Your MRS is 1 by 2 root x, which is equals to px by py. Now please solve for x. So if you solve for x, this will be py by px 2 equals to root x. Therefore x will be equals to py square by 4 px square, right? So this is your x, right? Now let's talk about y. So for this we need to, for y we need to put x in budget line, that is px into x, your x equals to py square 4 px square plus py into y equals to m. Now in this case we can cut this down, and we have, take py common, you will get py by 4 plus y equals to m. Solve this equation for y, you will get m by py minus py by 4. So this is your optimal amount of y. So given the value of prices and income, you will get x star and y star, which is equals to py square by 4 px square comma m by py minus py by 4. Guys, one thing I want to tell you, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे कि जहाँ पे आपका m मिनिमम हो, मतलब टेंडिंग टूवर्ड जीरो, बहुत ही ज़्यादा कम हो, उस केस में यू विल कंज्यूम फर्स्ट x, राइट? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका x क्या है, py स्क्वायर 4px स्क्वायर, राइट? एंड लेट्स से your prices are py equals to 2, px equals to 1, and let's say m equals to 2 for example, right? So in this case your x equals to what? 2 square, which is 4 by 4 into 1 ka square. Your answer is 1. In this case your x equals to 1. Now your price of x is 1, so you can purchase x and you will left your income as 1, right? Your income will be 1 after purchasing good x. Now if I convert this example and if I say now your m equals to half, so guys, you will not, in this case you will not, I am repeating, you will not purchase good y at all. You will only purchase good x, and in this case your x will be equals to 0.5. Although your optimal x is 1, but आपके पास enough income नहीं है, therefore in this case your x equals to 0.5 only. Remember that guys, right? क्यों 0.5? The reason being price of x into x plus price of y into y should be equals to m. In this case, since आपकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, therefore this is equals to 0, you are not consuming this, therefore 1 into x should be equals to 0.5, and therefore x equals to 0.5. So guys, please remember this. Yeah, so this is all about how to find the demand bundle.
Now let's talk about price elasticity and the income elasticity of demand. So first write down price elasticity of demand. So I am doing for good x, guys. आप please good y के लिए करना इसको, right? So we know the formula. The formula is dx by dp x into px by x, and we know that your optimal x equals to what? py square by 4px square, right? Now all you need to do is first differentiate with respect to price, and in this case price of x per se. So if you do dx by dpx, what you will get? You will get minus 2 py square 4 px cube, right? So write it down, minus 2 py square divided by 4 px cube into px, x equals to py square into, ये क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था, into 4. So you can cut this down, you can cut this as well. So your answer is minus 2. It means that if you increase your price 1%, your demand for good X will be or will decrease by 2%, right? Remember that, you need to say that. So if prices are increasing by 1%, then demand for good X will decrease by 2%. Why decrease? Because of this negative sign. अगर बाय चांस आप डिमांड की बात करो और यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आता, तो समझ जाना कि आपका डिमांड इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. बट जैसे आपका नेगेटिव साइन है, इसका मतलब आपका डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Income elasticity of demand. This is again for good X. Guys, please do it for good Y. So in this case your formula is income elasticity of demand equals to dx by dm m by x, and we know that x equals to py square by 4px square. अब मुझे एक चीज़ का आंसर बताना आप लोग. अगर आप dx by dm करते हो तो ये आता है 0. वाई 0? बिकॉज x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम. देयरफॉर 0 into anything will be equals to 0. It means that your elasticity, income elasticity of demand equals to 0. It means that your income elasticity of demand equals to 0. It means if you increase or decrease your income by any amount, it will not affect X.